हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेस सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू पीपल। Okay, the topic that we are going to start today is called, it's a new topic, and this topic is called बच्चों object oriented programming. So this is one of the main topic of P3 as well as P4 that we are going to start. And if you want to pursue your career in computer science बच्चों, तो this is the main topic. आप कोई भी अच्छा प्रोग्राम डेवलप करने जाएंगे तो वहां पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विल बी इन्वॉल्व एवरी टाइम, हमेशा। विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप कभी भी कोई अच्छा कोड, कोई अच्छा प्रोग्राम क्रिएट नहीं कर सकते। यू ऑलवेज नीड टू क्रिएट, यू ऑलवेज नीड टू परफॉर्म, you always need to perform ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बच्चों। कोई भी आप लोग को अच्छा गेम डेवलप करना हो, कोई भी आप लोग को अच्छा प्रोग्राम डेवलप करना हो, कोई भी आपको एप्लीकेशन डेवलप करनी हो, तो बैकएंड के ऊपर आपके पास हमेशा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज बीइंग इन्वॉल्व्ड। So when we talk about object oriented programming, it consists of four main pillars. और भी pillars होते हैं, but the main pillars are four, and those pillars are: number one, encapsulation; number two, inheritance; number three, polymorphism; number four, abstraction. So these are the four main pillars of object oriented programming: encapsulation, inheritance, polymorphism, abstraction. वन बाय वन विद टाइम बच्चों मैं आप लोग को बताता रहूंगा कि व्हाट इज एनकैप्सुलेशन, व्हाट इज इनहेरिटेंस, बट अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे डिफाइन करा कि आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के दीज आर द मेन पिलर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यूज करते हैं, एंड दैट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बच्चों इज कॉल्ड क्लास। So if I define class over here, it's a user defined, it's a user defined
data type that consists of attributes and methods. So when we talk about attributes, so attributes बच्चों are variables and methods are your functions and procedures. जनरली बच्चों क्या होता है आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स आर केप्ट प्राइवेट. प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि दे कैन only be accessed within क्लास. तो आप जब एक क्लास क्रिएट करेंगे तो प्राइवेट का मतलब ये होता है बच्चों दे कैन ओनली बी एक्सेस्ड इनसाइड द क्लास. क्लास के बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स, सो जनरली हम इनको क्या रखते हैं, वी केप्ट देम एज पब्लिक. हम इन्हें बच्चों पब्लिक रखते हैं. एंड पब्लिक का मतलब क्या होता है कि they can be accessed outside the class as well. तो आप उन्हें बच्चों क्लास के बाहर भी क्या कर सकते हो, कॉल आउट कर सकते हो. सो दिस वाज अ स्मॉल डेफिनेशन बच्चों ऑफ अ क्लास. अब देखिए अगर मैं एक बहुत अच्छी सी क्लास बना लूं, मैं यहां पे बहुत अच्छी अच्छी चेयर्स लगा दूं, मैं प्रोजेक्टर लगा दूं, मैं बोर्ड लगा दूं, मैं एसी लगा दूं, मैं 2 एसी लगा दूं, मैं फॉर्म वाली चेयर्स लगा दूं, मैं स्पीकर्स लगा दूं पीछे, मैं बहुत अच्छी क्लास क्रिएट कर लूं, बट दैट क्लास इज यूजलेस. वो क्लास यूजलेस है बच्चों जब तक स्टूडेंट एंड टीचर्स ना आए, तो दैट क्लास विल बी यूजलेस. जब बच्चे और टीचर आके उस क्लास के अंदर पढ़ाई करेंगे तो देन दैट क्लास विल बी कन्वर्टेड इनटू अ यूजफुल क्लास. तो सिमिलरली ये जो आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास क्रिएट करते हैं बच्चों, ये क्लास भी क्या होती है आपके पास, दिस इज यूजलेस जब तक आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करें. सो दिस is another thing that you should remember कि object of the class is executed, not the class. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये ऑब्जेक्ट क्या चीज है. तो बच्चों क्लास क्या चीज थी आपके पास, क्लास वाज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. तो भाई डेटा टाइप किसकी होती है, वेरिएबल की होती है ना. तो ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली दैट वेरिएबल जिसकी मैं डेटा टाइप ये क्लास डिफाइन करूंगा, जिसकी डेटा टाइप मैं ये क्लास डिफाइन करूंगा. तो बच्चों दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट. सो मैंने ऑब्जेक्ट भी डिफाइन करवा दिया ताकि आप लोग जब रिवाइज कर रहे हो तो आपको पता हो कि ऑब्जेक्ट क्या होता है आपके पास. एक्चुअली दिस इज अ वेरिएबल having
data type of class. So this was a small introduction बच्चों about object oriented programming. मैंने आप लोग को बताया कि object oriented programming is implemented using class. Class is actually a user defined data type having attributes and methods. Attributes are variables and methods are functions and procedures. Then I told you people, a class by itself is not being executed. Class का object execute किया जाता है and object is actually the variable having the data type of the class. और इसके बच्चों आपके पास 4 मेन पिलर्स हैं. अभी मैंने आप लोग को एक पिलर के बारे में भी बात नहीं करी. The 4 main pillars of object oriented programming are encapsulation, inheritance, polymorphism and abstraction. One by one मैं सबकी बात भी करूंगा. So now moving forward बच्चों आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे थोड़ा सा और now let's declare a class. एक जरा मैं अपने यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूं and before I create a class मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करी. This is called a class diagram. इस डायग्राम को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? We called it a class diagram. ये क्लास डायग्राम आप लोग को डिफाइन करती है. सबसे पहले व्हाट विल बी द नेम ऑफ द क्लास. लेट्स से मैंने क्लास का नाम रखा बच्चों स्टूडेंट. देन बच्चों जो जो वेरिएबल्स आएंगे आपकी क्लास के अंदर आप लोग यहां पे डिफाइन करते हैं. तो मैंने बता दिया st नेम, the data type will be string and let's say age, the data type will be integer. So these are the 2 variables that I'm going to use in this particular class. So this is the first stuff is the name of the class. This is name of class. These are the variables that we are going to use in this class. और variables को हम लोग क्या कहते हैं? We also call them as attributes. और यहां पे बच्चों आपकी क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो यहां पे आप लोग प्लेस करते हैं. लेट्स से द फर्स्ट फंक्शन इज कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है बच्चों आपके पास. कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसीजर या मेथड. इट्स अ स्पेशल type of method. जनरली आपकी जितनी भी क्लासेस होती हैं उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर जरूर होता है. ये करता क्या है बच्चों? द मेन एम ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज initialize the attributes. इसका बच्चों सिर्फ एक मेन एम होता है इस कंस्ट्रक्टर का एंड दैट एम इज कि आपके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज करवाता है. दैट्स द मेन एम, दैट्स द मेन पर्पस ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर. इसके बाद बच्चों आप लोग और भी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं. लाइक लेट्स से set name. If you want to update the value of the name, if you want to display the value of the name, so you can have get name.
Or similarly, you can go with age as well. You can create a constructor, a set age and get age methods for this class. So this is the class diagram. तो ये एक छोटी सी बच्चों मैंने आप लोग के सामने क्या ड्रॉ करा है, एक क्लास डायग्राम. ये क्लास डायग्राम आप लोग को डेमोन्स्ट्रेट करती है कि what is the name of the class, what are the attributes, what are the methods that you are going to define inside the class, and that's it. अब हम लोग बच्चों क्या करते हैं, इस क्लास को सूडो कोड की फॉर्म में पहले परफॉर्म करते हैं, एंड आफ्टर परफॉर्मिंग इन द फॉर्म ऑफ सूडो कोड हम इसकी पाइथन के अंदर कोडिंग भी जरूर देखेंगे आज की क्लास के अंदर, सो दैट हमारे पास दोनों फ्लेवर आ जाएंगे कि when we are performing the pseudocode we are performing P3, and when we are doing the Python code so we are performing P4. We have a question before we move forward. क्या सवाल आ गया भाई? Let me check. सर ये P1 क्लासेस वाला है. मैंने तो P1 में कोई क्लासेस नहीं पढ़ाई. P1 में तो कोई क्लासेस नहीं कि हमारे पास. आई डिडंट रिमेंबर एनीथिंग. P1 में क्लासेस कब पढ़ी हम लोगों ने? मुझे तो याद नहीं आ रहा. नहीं नहीं भाई, दैट इज टोटली डिफरेंट. वो तो आईपी एड्रेस की क्लासेस थी. दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट. क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी. ये आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है. तो इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए हम एक डेटा टाइप क्रिएट करते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप इज कॉल्ड क्लास. ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब मैंने बच्चों ये क्लास क्रिएट करी. सबसे पहले मैंने यहां पे चेक करा, द नेम ऑफ द क्लास विल बी स्टूडेंट. Oops, sorry. The keyword for the class is class, and then the name of the class is student. अब मैं बच्चों यहां पर अंदर आ गया. मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं. वन इज st नेम एंड द अदर वन इज एज. मैंने इन दोनों को डिफाइन करा. प्राइवेट st name and it will be string private age and it will be integer. So in object oriented programming बच्चों you don't write declare. आप लोग या तो लिखोगे प्राइवेट या फिर आप लोग लिखोगे पब्लिक. So you can use two words only. Either you define the variable as public or you define the variable as private, and generally हम लोग बच्चों अपने variables को private रखते हैं. Now मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लिए, मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए. अब मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है. I told you people, constructor is a special type of method. It's a special type of procedure. ये करता क्या है आपके पास? आपके वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाता है. मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा बच्चों, पब्लिक procedure, and the keyword for the constructor is new. So बच्चों, this is the keyword for the constructor, and मैंने यहाँ पे डिफाइन करा by well name. It will be of course the string. By well age, it will be integer.
Now, whatever the value of this name will be, तो बच्चों मैंने यहां पे सेट करवा दिया towards st name will be equals to whatever the value of this parameter will be, that will be name. Now, whatever the value of this a will be, so age will be equals to a, और यहीं पे बच्चों मेरे पास क्या हो गया, इट विल बी एंड procedure. So this is बच्चों my constructor. It's a special type of method that initialize your attributes. Now whatever the value you are going to enter for the name, तो बच्चों वो assign हो जाएगी आपके पास st name को. Whatever the value you are going to enter for a, that will be assigned बच्चों to age. So this is a special type of method that is used to initialize your variables. और इसका कीवर्ड क्या होता है, न्यू. Now moving further forward बच्चों, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. अब नहीं, अभी मैंने क्लास के अंदर और भी चीजें करनी है ना. अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ कंस्ट्रक्टर ड्रॉ करे, मैंने वेरिएबल्स डिफाइन करे, मैंने क्लास बनाई है. सेट नेम और गेट नेम भी बना देते हैं यहाँ पे जरा जल्दी से. तो लेट्स क्रिएट अ सेट नेम नाउ. पब्लिक procedure set name. Let's say whatever the value user is going to enter about the name, I am going to assign this value to st name. और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, एंड प्रोसीजर. सिमिलरली अब बच्चों मुझे एक बनाना है गेट नेम. अब मुझे बनाना है गेट नेम. तो गेट नेम क्या करता है, आपकी वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा. तो इट विल बी अ फंक्शन पब्लिक function get name returns string, or inside the function it's simply going to return whatever the value of st name is. Return st name. और यहीं पे मैंने बच्चों फंक्शन अपना एंड करा, एंड फंक्शन. और यहीं पे मैंने अपनी क्लास भी एंड कर दी, दैट विल बी एंड क्लास. So this is a small class बच्चों that we created. The name of the class is student, having two attributes st name and age. Having a constructor, the keyword for the constructor is new. The role of the constructor is to initialize the variables. Whatever the value I'm going to enter for the name and a, but so that will be initialized to st name and age. Then I'm having a setter, बच्चों इसको हम लोग setter कहते हैं. So whatever the value I'm going to enter for na, that will be initialized to st name, and this is called a getter. Whatever the value of st name is, that will be displayed on screen आपके पास
डिस्प्ले कर दी जाएगी। और यहीं पे मैंने अपनी क्लास क्या कर दी, एंड कर दी। एंड दिस वाज दिस क्लास डायग्राम जो आप लोग को बताती है कि हाउ व्हाट स्टफ योर क्लास इज गोइंग टू कंटेन, आपकी क्लास क्या क्या चीजें कंटेन करेगी। तो क्लास डायग्राम आपको डेमोन्स्ट्रेट करती है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट योर क्लास इज गोइंग टू कंटेन। तो आई होप बच्चों यहां तक आप लोग को सारी चीजें क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वायरीज है, कोई स्टफ दैट यू नीड टू दैट यू वांट कि मैं रिपीट कर दूं, फील फ्री टू आस्क, वरना क्लियर लिख दे मैक चैट के ऊपर, आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड देन। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, फील फ्री टू आस्क, वरना जस्ट राइट डाउन क्लियर बच्चों, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। कोई सवाल, कोई डाउट, एनीथिंग दैट यू नीड टू आस्क? ठीक हो गया। सो देखो पर्पस क्या होता है हमारे पास, द मेन पर्पस इज दैट we can implement these things. These are the pillars of object oriented programming, and we can implement these pillars, we can only implement these pillars with the help of object oriented programming. तो अभी आपको आगे जाके और फर्दर इसका पर्पस क्लियर होगा बेटा। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया था a class by itself is not being executed, क्लास का ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट किया जाता है। तो लेट्स क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट्स अ वेरिएबल हैविंग द डेटा टाइप ऑफ द क्लास। तो मैंने यहाँ पे बच्चों ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, लेट्स से st1 is equals to new, the name of the class is student। और यहां पे बच्चों जो मैंने कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज डिफाइन करी हुई थी, मैंने यहां पे डिफाइन कर दी। लेट्स से I assign the name as Sabha and I assign the age बच्चों let's say 15 and we are done. So this is called the object of the class। ये आपकी क्लास का बच्चों ऑब्जेक्ट कहलाता है। दिस न्यू कीवर्ड ये आपकी क्लास का क्रिएट्स इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इंस्टेंस ऑफ अ क्लास क्या होता है? आपकी मेमोरी में एक जगह क्रिएट कर देगा where you are going to store the data, so it creates an instance of the class and this was, ये आपकी क्लास हो गई, this is your class student and these are बच्चों, ये आपने कंस्ट्रक्टर में बताया था कि पहले आप लोग नाम डिफाइन करेंगे and then you are going to define the age of that particular student। अब मुझे बच्चों मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे कॉल करा st1 डॉट गेट नेम। तो बच्चों नाउ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? इट विल बी कंटेनिंग अ वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? गेट नेम, बिकॉज द नेम आई हैव सेट ओवर हियर इज सबा। तो इसकी वैल्यू क्या सेट हो जाएगी हमारे पास? सबा सेट हो जाएगी। अब अगर मैं यहां पे क्या करता हूं st1 डॉट st name, दिस वाज माय वेरिएबल। तो बच्चों अब बताएं अब ये क्या करेगा? अच्छा, आप कोई भी चीज कॉल करते हैं अपनी क्लास से तो आप ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल कर सकते हैं। दिस इज योर ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल कर सकते हैं। विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट आप अपनी क्लास से चीजों को कॉल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अब बताएं बच्चों अब क्या होगा? एनीवन? आई वुड लाइक टू नो द आंसर। अब क्या होगा? st1 डॉट st नेम,
आई वुड लाइक टू नो द आंसर। जो भी आप लोग के माइंड में, आप प्लीज शेयर करें। वी हैव प्रोवाइडेड अ वैल्यू, एसटी नेम की वैल्यू सब है। मोहित, द वैल्यू ऑफ एसटी नेम इज सब। वी हैव प्रोवाइडेड द वैल्यू। व्हाट विल बी डिस्प्लेड बच्चों, क्या डिस्प्ले होगा, क्या वैल्यू आएगी हमारे पास एसटी नेम की? चले मैं थोड़ा सा और इसको आप लोग के लिए आसान कर देता हूं। आउटपुट एसटी वन डॉट। ओके, तो मोहित ने बताया कि सर सभा विल बी डिस्प्लेड, तो दैट्स अ रॉन्ग आंसर। सर क्यों? हमारे पास एसटी नेम की वैल्यू तो सब है, तो ये डिस्प्ले क्यों नहीं होगा बच्चों? ये आपको देगा एक अदद एरर। सो एरर क्यों देगा बच्चों? बिकॉज st name this st name is actually this st name is actually a private candidate। एक प्राइवेट स्टफ है ये आपके पास, एंड प्राइवेट चीजों को आप क्लास के बाहर डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। आप सिर्फ पब्लिक चीजों वालों को कॉल कर सकते हैं, आप प्राइवेट वाले को एक्सेस नहीं कर सकते। आपको एरर दे देगा, वो डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है, सो अब अगर मुझे इसको डिस्प्ले करवाना है तो बच्चों आई कैन डिस्प्ले विद द हेल्प ऑफ आउटपुट st1 dot get name, because this get name procedure is public। तो ये मेरे पास बच्चों अब ये डिस्प्ले करवा देगा स्क्रीन के ऊपर सबा। बट मैं अपने वेरिएबल्स को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता बिकॉज दे आर प्राइवेट। तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए बच्चों, या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब मुझे वैल्यू अपडेट करनी है, मुझे सबा का नाम चेंज करके लाइक लेट्स से मुझे उसे शामिर करना है। सो हाउ हाउ आई कैन डू? मैंने यहाँ पे एक सेटर बनाया, बता दिस वाज माय सेटर। तो आई कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ सेटर। मैंने यहाँ पे कॉल करा st1 डॉट set name and I define the value as now Shami। अब अगर बच्चों मैं इसको कॉल करता हूं लाइक आउटपुट st1 डॉट गेट नेम, तो नाउ अब क्या वैल्यू डिस्प्ले होगी मेरे पास? अब मेरे पास डिस्प्ले हो जाएगी द वैल्यू शामी, बिकॉज आई हैव अपडेटेड द वैल्यू। अब मेरे पास बच्चों शामी डिस्प्ले हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, this is how you initialize the values, this is how you assign the values, and getter setter। हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे मल्टीपल बातें करी। अगर यहां तक कोई सवाल, कोई डाउट, कोई चीज दैट यू नीड टू आस्क, पूछ लें। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें बच्चों रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, आई थिंक वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। तो अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेम हम आई एम रियली सॉरी बेटा, बिकॉज माइक, मेरे पास माइक अवेलेबल नहीं है। द हेडसेट आई एम यूजिंग, इसके अंदर माइक नहीं होता। तो मुझे आप सवाल कर भी लेंगे तो मुझे आवाज नहीं आएगी। और मैंने टैब में भी माइक्रोफोन कनेक्ट नहीं करा हुआ है, तो इट विल टेक टाइम। तो आप यहीं पे अपना क्वेश्चन टाइप कर दो, जो भी सवाल है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों। नाउ लेट्स इंप्लीमेंट द सेम कोड। अब जरा सेम कोड, सेम क्लास बनाते हैं किसके अंदर? पाइथन के अंदर भी क्या करते हैं हम लोग? सेम क्लास क्रिएट करते हैं। ठीक है, इट विल टेक हार्डली 5 minutes। लेट्स क्रिएट।
ओके जी, सो दिस इज आवर क्लास। मैंने यहाँ पे बताया बच्चों क्लास, आई नेम द क्लास स्टूडेंट एंड देन वी आर हैविंग अ कॉलन ओवर हियर। नाउ आई एम इनसाइड द क्लास। मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ड्रॉ करा। तो बच्चों कंस्ट्रक्टर ड्रॉ करने के लिए द कीवर्ड इन द क्लास इज डेफ फॉर अ प्रोसीजर एंड द कीवर्ड फॉर द कंस्ट्रक्टर सूडो कोड्स में हमारे पास जैसे था दैट वाज इट वाज क्या था हमारे पास न्यू। तो यहां पे होता है बच्चों डबल अंडरस्कोर इन इट सेल्फ। सो दिस इज द कंस्ट्रक्टर इन पाइथन। ये सेल्फ क्या चीज होती है आपके पास? ये सेल्फ एक्चुअली आपको बताता है आप पाइथन के अंदर वेरिएबल्स डिफाइन नहीं करते। आपको ये पहली बात तो पता ही है। तो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं आप उनको अपनी क्लास के अंदर कॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और तो बच्चों ये सेल्फ इज एक्चुअली दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट थ्रू विच यू आर गोइंग टू एक्सेस योर वेरिएबल्स। अब मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया लेट्स से एन एंड ए दैट विल बी एज। और मैंने बता दिया सेल्फ डॉट एनी या एस टी नेम विल बी इक्वल्स टू एनी एंड सेल्फ डॉट एज विल बी इक्वल्स टू ए। सो दिस इज हाउ बच्चों मैंने यहां पे अपना कंस्ट्रक्टर बना लिया। द कीवर्ड फॉर द कंस्ट्रक्टर इज डबल अंडरस्कोर इन इट सेल्फ इज द कीवर्ड। पहले बच्चों एनए हम लोग एंटर करेंगे दैट विल बी असाइन टू एस टी नेम एंड देन बच्चों मैं ए एंटर करवाऊंगा एंड दैट विल बी एज। तो मैंने यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्टर कंप्लीट कर लिया। आफ्टर क्रिएटिंग द कंस्ट्रक्टर नाउ मैंने एक सेटर बना लिया def set name whatever the value you are going to enter बच्चों for na and that will be assigned to self dot st name will be equals to na। और अगर मैं यहाँ पे एक getter भी बना लूं बच्चों तो that will be def get name self और मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया that will be return self dot st name and I'm done with the class। पाइथन में बच्चों the things are very simple। मैंने अपनी क्लास बना ली, क्लास का नाम रखा मैंने स्टूडेंट, मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया, मैंने वैल्यूज इनिशियलाइज करवा दी और मैंने यहाँ पे बच्चों एक सेटर बना लिया, एक गेटर बना लिया। नाउ लेट मी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा दैट वाज st1 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट and I define the values। let's say मैंने यहाँ पे नेम डिफाइन कर दिया बच्चों सबा and I define the age as 50। मेरा कोड बच्चों बिल्कुल प्रॉपर्ली रन हो गया। अब मैं जरा अगर मैं यहाँ पे कॉल करता हूं लेट्स से प्रिंट st1 डॉट गेट नेम। सो यू कैन सी मेरी स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो जाना चाहिए? इट शुड बी डिस्प्लेड सबा और बच्चों मेरी स्क्रीन पे सबा डिस्प्ले हो गई। अब मैं बच्चों नाम अपडेट करना है मुझे। लेट्स से मैं अब डायरेक्टली एक्सेस करता हूं st1 dot let's say set name। I updated the name to Shamir। और अब अगर बच्चों मैं यहाँ पे यूज करता हूं प्रिंट st1 dot get name so you can see that now the value will be updated to Shamir। तो बच्चों फर्स्ट द वैल्यू वाज सबा, नाउ द अपडेटेड वैल्यू इज शामिर। लेकिन बच्चों अभी मैंने यहाँ पे अपने एट्रीब्यूट्स को पब्लिक डिफाइन करा हुआ है। पाइथन में पब्लिक और प्राइवेट का कॉन्सेप्ट क्या है बात करेंगे बट नॉट राइट नाउ, आज बात नहीं करेंगे। अगले सेशन के अंदर बच्चों वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल कि पब्लिक किस तरह करते हैं, प्राइवेट किस तरह करते हैं, बिकॉज आई विल बी रिकॉलिंग द स्टफ एंड वी आर आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द इनहेरिटेंस। मल्टीपल बातें करनी हम लोगों ने अगले सेशन के अंदर अबाउट क्लासेस, अबाउट इनहेरिटेंस, अबाउट मल्टीपल थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। तो आज इसको बच्चों हम लोग यहीं तक होल्ड करेंगे। इंशाअल्लाह अगली क्लास में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को और फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फर्दर स्टफ इन आवर नेक्स्ट सेशन।
ठीक है, देख लो जरा, दिस इज द होल कोड दैट वी हैव। ठीक है, तो आज इसको बच्चों ये तक होल्ड करते हैं, मोस्ट लाइकली अगली क्लास का ना इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। समाज में मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।